That's a very powerful tool. Okay. So for, basic, if you want to organize, okay, manipulate your data, okay, for a small organization, if they want to keep like employees data, maybe salary, payroll information, maybe HR details, maybe recruitment details, everything they can get it done in Excel. It's a very powerful tool. And normally people, generally ignore it. ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ Excel ରେ କିଛି ନାହିଁ Excel, see whatever you have learned, if somebody has learned it in PGDCA Excel କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ, to be very honest, I'll tell you. PGDCA, changing the font color, then going to format cell, aligning left, right, that will not help in data analysis. Okay, you have to learn some advanced functions. Okay, you have to learn advanced lookup functions, pivot tables. Okay, then advanced filters. You have to learn how to use complex if else statements. That is how it is going to help you much in data analytics. Okay, so there are people who start their career in Excel. They get salary up to 35,000 at the beginning. Okay, so there are companies, okay, where managers are working only in Excel. Okay, they're getting 20 lakhs, 25 lakhs package. Day in, day out, they're working only. Of course, they have management skill, but Excel is such a powerful tool. If somebody is an expert in Excel, they can earn much more. Okay. I mean, whatever a one programmer, one tester, developer, whatever business analyst gets. So proper SQL Excel developer gets that much of salary. Okay. So you cannot take Excel for granted. It's very powerful tool. Even if you learn it for a year also, you cannot complete Excel. So we'll learn the important aspects of Excel. ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ ମେନଲି ଦରକାର ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବା। ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଭାଷ୍ଟ ଟୁଲ୍। ଓକେ, କେହି ବି ଯେ ଏକ୍ସେଲର 10 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି, I'll share my experience. So I was teaching a group of MIS officers from Jagatsinghpur district. Semana, they have been working in Excel from last 10 to 12 years. Okay, so from second, on the second day, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପଢ଼େଇଲି, they were not aware. But they are working in Excel from last 12 years. MIS, they are extensively using Excel. Okay, day in, day out Excel. ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ Excel ରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। ବଟ୍ 10-12 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଆମେ ଏତେ ବି ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ଏଥିରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନଙ୍କୁ 80% ଜିନିଷ ଜଣାନଥିଲା। Okay, such powerful tool Excel is. Okay, so I think most of you know it's a Microsoft product. MS Office suite re ase. Clear? Yes or no? Yes. Yes, sir. So, and if you understand Excel thoroughly, the best part is if you understand Excel thoroughly, Power BI is 50, I'll not say 50%, 40% of Power BI you can easily understand. 30 to 40% of Power BI you can easily understand. Power BI kuhante Excel on steroid. Excel on steroids. Excel on steroids. The mane Excel ro powerful version. Okay, so there also you will find lot of formulas, functions. Okay, etire jaha jaha सब formulas achi, functions achi, operations achi, that you can also do it in Power BI as well. But the Excel re, if you are strong, then understanding Power BI becomes much more easier. Okay, so let's understand what Excel is. Excel is a powerful tool developed by Microsoft. Most widely used software for creating, organizing, manipulating numerical and textual data in a tabular form. It's very and it is a standard software. I mean, every laptop or PC you will have MS Office installed. Be it your beat the budget, beat the daily expenses if you want to maintain, okay, daily income and expenses. Okay, if you want to do budgeting for a small company, they want to work on payroll part, they want to hire resources, their details, they want to capture employee details. Let's say companies like, let's say Talentel. Okay, Talentel has around 10 employees. Okay, so we cannot go for a CRM software, we cannot go for an ERP software. Okay, like big SAP, maybe Java customized developed software because we cannot afford that much. Okay, so Excel is a savior for us. Okay, so Excel re ame sabu kichi maintain kar starting from student data, employee data, payroll information, fees information, everything we can capture it in Excel. So small sized company ko paiki Excel is sufficient to maintain everything, their data. Okay, day to day activities data. Okay, you can maintain everything in Excel. Okay,
So Excel is it's commonly used to organize data, perform calculations, create charts, graphs. So basic calculation, let's say John basic hela 25,000. Okay, तो कमे HR केते दोचे. Okay, special allowance केते दोचे. Night shift रे काम करछे night allowance केते दोचे. Okay, PF केते deduction करछे. तमे पूरा complete गोटे payroll system बने दे परिबो by using Excel. Okay, so Excel is part of Microsoft Office suite, which also includes programs like Word, PowerPoint, Outlook. Okay, there are other okay softwares also. PowerPoint used for presentation, Word for documentation, Outlook for it's for sending email and all. Okay, so it helps you to work with numbers and text in the in tables. So Excel also maintains data in tabular structure. Okay, Excel also maintains data in tabular structure. Okay, then Excel uses grid-like interface to organize data in rows and columns. So when it is saying grid-like interface, this is a grid-like interface. When you have rows and columns, this, okay, it's a grid-like interface. Okay. So can you guys tell me how many rows and how many columns I have here in this table? Sir, 5 rows, 4 columns. 5 rows, 5 columns. 5 rows, 4 columns. Okay, these are the columns. Okay, এটা Yes. vertical orientation ଅଛି याको column कोते जोटा horizontal orientation रे था ताको row. Okay, so I hope everyone understood. Excel uses grid-like structure. This is nothing but a grid-like structure. So row column जोटा अछि, so that's a grid-like structure to organize data in rows and columns. Okay, so formulas and functions. Okay, Excel lets you perform calculation and data manipulation using formulas and pre-built-in functions. Okay, we can also write formulas, okay, to manipulate the data. Okay, data manipulation point we can use formulas. There are functions also. So functions I'll explain you later, but functions माने कौन तमे Excel रे गोटे sum function अछि जानथियो, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So basically, let's say एठी गोटे cell अछि एमती. Okay. So move it like 10, it like 20. Okay. Excel each, if you want to write any formula or function, you have to use equal sign. Okay. Equal sign re mu likh deli 10 plus 20. So enter press kala mate output मिलिबो 30. I hope everyone knows this. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, 10 sir. plus Yes, sir. you will get 30. So this is called a formula. So I'm using this addition, I mean plus sign to add two numbers. So function means what? This is called predefined formula. Predefined formula माने मुझे लिखले equals to bracket लिखले sum. I'll pass 10, 20. Now it will also give me 30. Sum function लिखली bracket start करले I have written 10, 20. It will also give me 30 because sum is a pre-built functions. ता माने sum background रे already code लिखा है कि sum use कला माने जितनी number तुम्हें pass करिबो सेतिंग number को से add करके दे दो. That is called pre-built functions. These functions are already ready for you. तुम्हें खाली use करिबो. Are you getting my point? Yes, sir. Pre-built means you are not writing. Here to add two numbers, we are using plus sign or tinta number को add करो चल you write again 30. So I'll get 60. 10 plus 20 plus 30 is 60. But sum रे केमती काम हुए? You will write sum. Okay, you just start a bracket, give a starting bracket, then write 10, 10, 10. It will give you 30. So what this function does is it takes all the numbers and add it and give you the final result. So sum होची आको कहंती function एटा already Excel रे develop हेची आमुको एमती टाइप रो किछि develop करिया ने. These are called pre-built functions. Functions means pre-written formulas. आ भितरे formula लिखा हेची एमती काम करियो पई. Okay, pre-written formulas. So hope this is clear to all of you. We'll discuss it. Don't worry. The practical sikiba. We'll discuss each and every point. So Excel, as you've seen, Excel is used. Okay, you can apply formulas and functions. Data analysis. Okay, you can analyze data. Excel offers tools like sorting, filtering, pivot tables, what if analysis to understand the data better. Okay, some huge data. So we can sort the data, we can filter the data. मते ए segment रो या देखियार अछि.
मतलब I can use different functions. Each, let's say, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ sales data ଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି each segment, each salesman କେତେ sales କରୁଛନ୍ତି, individual sales ଅଛି. Let's say I'll say Sasmita has sold this phone on this particular date. Okay. Devashish has sold this phone on this particular date. Okay. So suppose मते monthly sales data को analyze करियर अछि. Each salesman करो monthly sales केते. Okay. Each phone रे केते sell हेच. Each segment रे केते sell हेच. Suppose किए east region रे sell करछि. ओडिसा रे let's say तुम sell करछ. किए west रे sell करछि. किए south रे sell करछि. किए north रे sell करछि. Region wise केते sell हेच. मैनेजर वाइज मे बी सेल्समैन वाइज केते सेल हेच. ओके. प्रोडक्ट वाइज के वन प्लस सेल करछे. ओके. के विवो सेल करछे. के सैमसंग सेल करछे. सो प्रोडक्ट वाइज मोर मंथली सेल्स कोन. ओके. सो दैट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस यू कैन डू. ओके. You have features like sorting, filtering, pivot tables. There are other formulas also which will help you to understand the data better. So data visualization. So Excel रे हम data visualize करि परिया. We can create charts, graphs. Okay. এটা আমি create କରି ପାରିବେ. Excel allows you to create charts and graphs to represent the data visually, because when you have a huge data set, जो तुमको माने let's say गोटे data set अछि, तम गोटे organization काम करछ, सेतरे लक्षे data set अछि, तमे मैनेजमेंट को डेटा को प्रेजेंट करियार अछि, कोन ओवरऑल स्टेटस कोन. सो मैनेजमेंट पाखरे एते टाइम नथिबो कि गो थ्रू 1 लाख रिकॉर्ड्स. ओके. मु सपोज मैनेजमेंट को 10 मिनिट रे इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करिया दरकार. सो मैनेजमेंट कोन बसिबो कि अच्छा ए सेल्समैन ए बाय करछि, से सेल्समैन सेटा बाय करछि. जैसे कोविड रे हमको रिपोर्ट आस्तला. सो कोविड रिपोर्ट रे सुब्रत बागची आसी थोड़ी ना कहउतले कि ए लोक को कोविड हेछि, से लोक को कोविड हेछि. ओके. ए लोक को हॉस्पिटल रो डिस्चार्ज हला, से लोक क्वारंटाइन सेंटर, इंडिविजुअल डेटा आसी कहउतले No. कि नो, राइट. ही वाज गिविंग अ समरी कि टोटल कोविड नंबर्स एति के these many numbers are positive. COVID test rate रे 10,000 टेस्ट हेइतला फर्स्ट फेज रे, 7,000 पॉजिटिव, 3,000 नेगेटिव. तापर क्वारंटाइन सेंटर रे 5,000 ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स दोतले. ही वाज नॉट सेइंग इंडिविजुअल रामश्यामर रिकॉर्ड आसी को नतले, राइट. इट वाज ए ओवरऑल रिपोर्ट ही वाज शेयरिंग विथ अस. इवन जेतबेले सेंटर रे भी हमें देखुतले, दे वर प्रेजेंटिंग इट in a presentation that was showing ki overall status kon. Okay. So एक particular area, let's say red zone रो अछि, एटा yellow रो अछि, एटा green zone रो अछि. That is how they were showing us. They were not focusing on individual data. सेमते गोटे कंपनी रो सेल्स को तुमको देखिया कोले, you cannot say कि इतार कंपनी जदी लक्ष्य डेटा अछि, मैनेजमेंट को हमें से लक्ष्य डेटा नहीं दबानी, राइट. सो वी विल हैव टू समराइज इट. समराइज करके मते गोटे प्रेजेंटेशन बनै कि सेठी मते शो करिया को गोटे विजुअलाइजेशन रे. अच्छा ए सेगमेंट रो एसएल हेछि, से सेगमेंट रो एसएल हेछि, नॉर्थ रो एतिक सेल्स आछि, साउथ रो एतिक सेल्स आछि, इनकम एतिक आछि, एक्सपेंसेस एतिक जाइछि. ओके. एक्सपेंसेस को सेगमेंट रो अधिक जाइछि, मो सैलरी रे सपोज मोर गोटे ऑर्गेनाइजेशन, मो सैलरी एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ऑफिस सेटअप एक्सपेंसेस, ऑल दैट आई हैव टू समराइज इट इन अ maybe I can use tools like Power BI, Excel रे भी we can create charts, graphs हमें create करके डेटा को visually represent कर परिया, right. So data visualization is important. कहीं ना data को visualize कले everyone can understand it very quickly. See, I'll give you two examples. So तुम गोटे बुक, स्टोरी बुक देबी, तुम गोटे मूवी देबी, तार गोटे मूवी देबी, तुम कोटा क्विकली सब बेल पई कोटा मन रखिबो, मूवीटा मन रखिबो ना स्टोरी बुक रो स्टोरीटा मन रखिबो. Obviously movie. मूवी Movie best. प्लस स्टोरी बुक तमे मे बी 3 आवर्स रे कंप्लीट करि परिबनी, बट मूवीटा तमे 3 आवर्स रे 2.5 आवर्स रे कंप्लीट करबो. लेट्स से 3 इडियट्स रो जो मूवीटा आइतला, 3 इडियट्स रे भी गोटे बुक थिला चेतन भगत रो. से बुक रो 300 पेज रो थिला, राइट. सो से बुक तमे पढिले तमे सेतिक दिन सब मन ही रख परिबनी, राइट. बट विजुअलाइज जो जिनसटा कल तमे लिटरली देखिला, विजुअलाइज कल, यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर. Okay, that is the importance of visualization. Our brain सेटा को easily digest करि परिबो. Okay, so visualization is important for every business nowadays, because senior management को stakeholder को data को visualize करि देखा हुए, data को interpret करा जाए ताकि सेमान कुंती बुझी परिबे. They will not have that much time कि हमें data को नेकरी ताको excel sheet टा दे दो. So they will not get anything out of it. Just a minute, guys.
So data import and data export. Okay. So data import and data export. So that means what we can do here is we can import data from other data sources. So basically see, we'll learn. Say Excel is a data source, CSV file can be a data source, and flat file, Notepad can be a data source. Then there are databases like, Oracle, SQL Server. Okay. Sir, one Azure. thing. Sorry for the interruption. Yes. What do you mean by CSV file? Comma separated values. Ah, Last time I have explained you, right? So Notepad, Oracle, SQL Server, Azure Cloud, maybe Amazon AWS SQL. There are many data sources. जो data में store करছে that is called data source. So Excel को जदि let's say गोटे database रे सेतिकी capability नथिबो visualize करिया पे तमे से data को Excel को import करिबो सेठी तमे charts graphs create करिबो. Okay. So कारण गोटे database रो काम होची data को store करिया. Okay. We cannot visualize it. We cannot create charts graphs. It doesn't have that capability to create chart graphs. तो ମୁଁ କେମିତି କରିବି? So data ଟାକୁ ମୁଁ import ମାନେ ସେଠୁ export କରିବି, Excel ରେ load କରିବି, load କଲା ପରେ ସେ data କୁ analyze କରିକି ମୁଁ visualization create କରିବି. So Excel ରେ data import export ଅଛି. Excel supports importing data from different sources and exporting it in various formats. Okay, so that is called data import and export. Clear? There are other sources from where you Yes, sir. can import the data, and you can also visualize it. Okay. So collaboration and sharing. So collaboration mane kono? Excel allows multiple users to work on the same spreadsheet simultaneously, making collaboration easier. Okay. Collaboration means suppose ମୋର ଗୋଟେ sales team ଅଛନ୍ତି. So I don't want them to maintain separate Excel sheets. ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ sheet ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର transaction I will capture. କିଏ କ'ଣ ସେଲ୍ କଲା, କାହାର କ'ଣ status, everything will be captured in a single Excel file. That is called collaboration and sharing. So Excel ରେ ଆମେ Excel use କରିକି we can use Excel to Excel will allow multiple users to work on the same spreadsheet simultaneously. Okay. So suppose ତମେ ଗୋଟେ रो एंट्री करदेल तापर तुम पर आउ जन गोटे फटाफट सेल कला सी गोटे एंट्री करदेला आउ जन एमती मल्टीपल जेमती गूगल शीट आजिका डेट रे समस्ते एक्टिवली यूज करछन राइट गूगल शीट कॉमनली शेयर होची समस्ते सेतरे तांकर निज डेटा एंट्री करछन सेमती कोलैबोरेशन शेयरिंग इज आल्सो देयर इन एक्सेल रे भी हमें the same file can be shared with multiple users and simultaneously they can work. So kahaku kichi impact hobani. Okay, that is called collaboration and sharing. Macros and automation. So okay, so macros and automation mane kono I'll explain you. I hope everyone is able to follow me. Are you guys finding it difficult? Okay, so clear? No, sir. Voice is not audible. No, I'm not speaking anything. Okay. Okay, then Sambalpur. Okay. So now, so Talentel has, let's say, many branch offices. Okay. So one is in the main head office is in Bhubaneswar, and okay. So then there are other areas, okay, other cities where we are also operating. So basically, let's say it has 4 admissions, it has 7 admissions, it has 8 admissions, 9 admissions, 20 admissions, 15 admissions, right? So now
So I need to send this data. Okay, I need to share this data. So now basically as a business person, what you will do is you will collect data from all the sources, right? Yes or no? Sir. Yes, ସମସ୍ତ sir. split କଲା ପରେ ତାପରେ ଡେଟା କୁ ମର୍ଜ କରିବ। ଓକେ, ମର୍ଜ କଲା ପରେ ଗୋଟେ sheet ରେ ମର୍ଜ କଲା ପରେ ତାପରେ ତମ ଓଭରঅଲ ଆନାଲାଇଜ କରିବ ଓଭରଅଲ ଟାଲେଣ୍ଟଲ ର କେତେ ଆଡମିशन ହେଇଛି, କୋଉ ସେଗମେଣ୍ଟ ରେ କୋଉ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆଡମିशन ହେଇଛି, କେତେ ଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି, କୋଉ ସେଗମେଣ୍ଟ ରେ କୋଉ ସୋର୍ସ ରୁ କୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି। ମତେ ଯଦି ଆନାଲାଇଜ କରିକି ମତେ ଗୋଟେ ସୁପର ଆମର ଜଣେ ବସ୍ କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦବାର ଅଛି। ସୋ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଫର୍ଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟିଂ ଦ ଡେଟା, ଦେନ୍ ମର୍ଜିଂ ଇଟ୍, ଦେନ୍ ଆନାଲାଇଜିଂ what has happened, right? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay, it's a daily task, right? Yes. Just a minute, guys. Good. Okay, so it is a daily task. Okay, so daily basis रे मते डेटा को कलेक्ट करियर अछि, ताकू मर्ज करियर अछि, गोटे शीट को नेकरी सब डेटा को कंबाइन करियर अछि, तापरे देन आई विल हैव टू एनालाइज एक्सेल रो फंक्शंस फॉर्मुलाज यूज करके डेटा को एनालाइज करियर अछि। So let's say it is a 2 hours task daily jonku, let's say 4-5 branch ଅଛି, ठीक ଅଛି। If you have more number of branches, then it's an hectic task, because daily basis रे first mo काम होची collecting the data, collecting the excel sheet from all the branches, then ताकू आनी कि मु merge करबी, different carefully merge करबी, carefully merge कला पर ताकू मु analyze करबी by using different functions and formulas. So right, so problem is daily task रे जण जे करथियो से बोर हे जो, बाय चांस इग्नोरेंस आसीबो, बेले बेले गोटे ब्रांच रो फाइल से मिस भी करि पारे, राइट? यस और नो? जब से सेम टास्क को तुम डेली करिवो, इट्स अ रूटीन टास्क, so obviously you will do mistakes, right? And it is also hectic for someone. For this person there won't be any learning anymore, right? Same day same task, दी घंटा समस्त कॉल करो, डेटा आनो, मर्ज करो। Okay, so what you can do is Excel supports macros and automation. Macros and automation. So Excel background रे गोटे programming language use हुए, Visual Basic for applications. Okay, Visual Basic for applications. So what it does is the VBA code is very simple. Have you heard of Excel macros? के सुनो छ Excel macros विषय रे? No, sir. No, sir. Okay, No. so Excel background रे हमें programming भी कर परिया। Okay, that is called Visual Basic for applications. VBA code use करा जाए, बहुत simple code. It is not as difficult as Java or maybe .NET, maybe C++ अगर आर किसी comparison नहीं, it's a very simple code, difficult नहीं। So we can write that VBA code to automate this entire process. Okay, आमे complete process को automation use करी परिया। आमे सेतरे code लिखले, थोड़े फाइल गोटे लेट्स से गोटे फोल्डर भितरे, गोटे फोल्डर बा डायरेक्टरी भितरे फाइल आसी गला, तम काम खाली रहबो फाइल टाको कॉमन लोकेशन रे पके दो। थोड़े फाइल गुडा आसी गला, तापरे यू कैन राइट कोड व्हिच विल एक्चुअली कंबाइन द डेटा और मर्ज द डेटा एंड एनालाइज। तुमरो जहा एनालिसिस करियार थिबो, तुम डेली बेसिस रे जहा एनालिसिस करियार थिबो, तुम सेटा को प्रोग्राम थ्रू रे लिखि देबो। सो इट इज अ 2 मिनट टास्क। थोड़े प्रोग्राम टा डेवलप हे गेला माने डेली बेसिस रे गोटे बटन टाको क्लिक कर दबो, ए काम हे जबो। दिस दी मिनिट रे इट विल नॉट इवन टेक 2 मिनिट्स, 1 मिनिट और सम सेकंड्स रे काम हे जबो, जोटा तुम डेली बेसिस रे 2 घंटा करथिलो। by using this Excel macros and automation, you can actually automate this complete process,
data collection. Once data is collected and kept in a single folder, so your program will run, which will combine everything, all the sheets. sheet को combine कला, filter करिवो, sort करिवो, तापर data को analyze करिवो, तापर report generate करके दे दो. Okay, got it? Yes, sir. Yes, sir. So clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. So now we'll see. I'll show you Excel interface. Okay, so I'll show you Excel interface, just a minute. Okay, so can you see my screen, guys? Yes, sir. Yes. Okay, so what you can do is, if you want to launch Excel, click on the start button. You have Excel here. Otherwise, you type Excel. Okay, so maybe type karo Excel. Excel पळे आसीबो. Okay, Excel ऊपर click करो. तापरे एटा blank workbook एटी double click करो. Okay, so that is one way you can Excel open Excel. So how good where होचे तमे window R Windows keyboard रे जो window रो key टा अछि R दीटा को simultaneously press करो. दीटा key को simultaneously you have to press these two keys together. Press कला परे you will write here Excel. Enter. एमती भी Excel launch हो. Blank workbook by default blank workbook. Double click. Okay, so item close Sir, कर दो. which version? हाँ हाँ. Which version? एटा होचे एक्सेल 2021 तमे एक्सेल 10 परर को भी वर्जन यूज करो चलिबो. ओके, Okay. बहुत 2003 7 10 हले टिके प्रॉब्लम. अदरवाइज एनी वर्जन 14 हला 17 हला 21 हला दैट इज आल्सो फाइन. और नहले लेटेस्ट होचे एक्सेल 365 यू कैन आल्सो डू दैट. ओके, सो एक्सेल तो बाय डिफॉल्ट समस्त कर थिबो लैपटॉप पीसी रे थाए. ओके, सो ओल्डर वर्जन हेले देखो 90% हम करि परिया, 10% हार्डली 10% फंक्शनलिटी काम न करि पारे. ओके, 90% मेन फंक्शनलिटी गुडा काम होई परिबो. आई मीन वी कैन यूटिलाइज दोस. ओके, सो मो पाखरे अछि एक्सेल रो 2021. ओके, सो जदि तुम पाखरे 14 17 अछि भी ठीक अछि. 10 and below is very old. So the Excel 2010 and below, they are like they are treated as older versions. ठीक अछि. तुमको you will have to use latest one. Latest माने कोन 14 लैपटॉप रे जहा चाहे थिंक सफिशिएंट. जदी लैपटॉप रिसेंट बाय करथियो दैट्स ओके. 5-6 वर्ष ओल्ड लैपटॉप हेले भी चलिबो. ओके, Sir, सो ମୋ ପାଖରେ 13 ଟା ଅଛି. 13 ठीक अछि चलिबो. ମୋର ବି 13 ଅଛି। Sir, हां, ହଁ. गोटे फंक्शंस आसीबोनी. दैट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन यू. बट गोटे फंक्शन न आस पारे दैट्स ओके. which is असुविधा नै. मेजर जिंस हमें सिखि परिया. मेजर फंक्शनलिटी हमें कवर करि परिया 13 रे 14 रे. ओके, okay. So now I'll explain you the Excel interface. Okay. Okay. I'll tell you. So this is called, okay. So this entire area is called ribbon area. Okay.
ये जो एरिया तुम देखो रिबन एरिया. Okay, so these are called ribbon area. ये जो home, my tab, insert, page layout, these are called tabs. Okay, tabs. So each tab, okay, when you click on each tab, so let me explain you. These are called tabs. These are called groups. ये जो गुड़ा ची देखो area टा एटा गुटे group. Okay, एटा होची font group. Each tab रे multiple groups अछन देखो गुटे tab open है ना ये गुटे group अछि. एठी गुटे group अछि. Okay, so tab under रे groups अछि. So groups under रे अच्छी command buttons. Okay, these are called command buttons. ये bold, italic, underline, border दबो. Suppose तमे किसी cell रे लिखो छ गोटे border दबो चाहो एटा होची background color, cell रे background color एटा कोनते cell right. I'll explain you. एटा होची foreground color, font color और text रो color एटा होची cell रो background color दबो. So एठी different type रो font change करि परिबो, style different type रो style use करि परिबो text रो. Okay, so these are called command buttons. Copy, paste, cut. Okay, these are called command buttons. Good. प्रथमे आसला tab. Tab under many groups are there. Okay, so each group रे तमरा command buttons अछि. Okay, so तमे जदि कोनोसी गोटे tab रे क्लिक करिवो. Okay, मु जदि कोनोसी गोटे tab रे क्लिक करिवि ये एरिया गुडा चेंज हे जिवो देखो. Okay, ये ribbon area change. एटा कोनते ribbon area जोटा चेंज होची. You guys can notice it, right? एटा चेंज हला. Mind tab को गली चेंज हे गला. Insert को गली चेंज हे गला. Page layout को ए तळ एरिया एटा चेंज होची, right? एटा कोनते ribbon area. Okay, clear? Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. First हला tab, then हला Yes, sir. command groups. Groups under असला command buttons. ठीक अछि. So then this is called formula bar. Formula bar माने तमे तो गोटे formula लिखिबो से formula टा 8 display हो. 8 लिखिबो देखो let's say I'll write 100 plus 200 enter कली. Okay, मु output रेट देखले 300 result असला 300 but कोन आ background रे को formula use हेछि. If I want to see, just click here, you will see it will show you the formulas over here. That is, this is called formula bar. Okay, formula bar रे formula देखा. Okay, so this is called name box. Name box means गोटे सेल रो एड्रेस टा देखा जिवो. सेल रो एड्रेस मींस व्हाट. सो देखो ये जो एगुडा हला रोज. आई थिंक यू ऑल नो these are called rows, right? मुझे कंप्लीट सिलेक्ट Yes, sir. कर. सो एटा हला rows and this is called A B C D columns, right? These are columns. So एगुडा हला rows. ठीक अछि. So rows और columns रे intersection रे you will have a cell. Okay, cell is an intersection of rows and columns. Okay, so cell रो a cell रो address होची D4 कारण D represents, okay, the address is, let's say for example who can tell me the address of this particular cell? E5. 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 Five. So E represents your column, 5 represents row. Okay, a fifth row रे अच्छे हमें और E column रे अच्छे, right? Clear? Okay. Yes. Yes, sir. Okay. So now, so E5 or D4 will be displayed over here. This is called address. I mean address bar you can say, or you can say name box, which will always show you the address of the cell. So are you all clear? Yes. Yes. Yes, sir. Rows sir. are presented. Rows are presented horizontally. Are presented vertically. Presented vertically. ठीक अछि. And cell Yes. कौन? Cell intersection of or combination of rows and columns. Intersection of rows and columns. Guys, nobody is going to ask this question to you. Don't make a note of it. Okay. So a basic गुड़ा सब nursery पिलांकर हमें cover करते हैं. Okay. जे तुम जान ना, so
Some of you may not be aware. So, okay. So rows, columns, cells, everything is clear, right? Yes, sir. Yes, sir. So now these are called, Yes, sir. okay, this is sheet one. Okay, sheet one. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ plus ରେ click କରିବି another sheet. Suppose sheet the reason of having multiple sheets is like ତମକୁ ଯଦି January data ମତେ ଏଇଠି maintain କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ sheet ରେ February data maintain କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ date ରେ March ର कि ମୁଁ Monday ରେ maintain କରୁଛି, ମୋର ବହୁତ transaction ଅଛି, ମୁଁ day wise data maintain କରିବି. Let's say 27 September ର data ଗୋଟେ sheet ରେ, 28 September ର data ଗୋଟେ sheet ରେ, 29 so on and so forth ଏମିତି maintain କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, you can create multiple sheets. देखो, you can create multiple sheets. 80 plus रे click कले, okay, plus रे click कले, you can create multiple sheets. So if you want to change the name, एटी देखो double click करे तमे change करि परिबो, otherwise right click rename. Okay, एटी double click कर दिया, mouse रे left click double click, हला नहले you can right click here and rename. Let's say I'll write January. Okay, here shit delete hela. Okay, rename February. Okay, suppose double click करके लिखले March. Okay, so I can create multiple sheets as per my requirement. मोर जदि किछि need थो, suppose my boss wants me to present data in this way, every sheet will contain every month's data, then I'll have to create multiple months. Okay, multiple sheet create add करिवि, सेतरे change करबि, add multiple months को rename करिवि, सेतरे मु data maintain करिवि. So clear? Are you guys getting it? बुझे होछि? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. So एटा तो हला scroll bar, एटा होछि horizontal. Yes. सर जदि आमे गोटे शीट रे गोटे थर जनवरी मासर डाटा ऐड करिकि आमे आ गोटे शीट को जाउते तो फर्स्ट शीट रो डाटा गुडाक माने क्लीन हे जिवो या से सेमति रहइबो ना रहिबो ना. ओके, फर्स्ट शीट रो डाटा फर्स्ट शीट रे रहिबो. तुमको तो कुआई सेग्रीगेट करिया पे कि सपोज तमरो लेट्स से जनवरी मास रे अराउंड लखे एंट्रीज होची कि 50,000 एंट्रीज होची, तो सेति पे कहगला तुमको एवरी मंथ रे ह्यूज ट्रांजैक्शन होची. सो मेंटेन डिफरेंट शीट टू मेंटेन द डेटा. ओके, सो जदि तुमको अल्प डेटा अछि, लेट्स से जनवरी मास रे 4-5टा ट्रांजैक्शन होची, फेब्रुआरी मास रे 5टा ट्रांजैक्शन होची, बहुत कम अछि ट्रांजैक्शन नंबर, आई विल मेंटेन व्हाई टू क्रिएट अननेसेसरी अननेसेसरली मल्टीपल शीट्स. गोटे शीट रे सब जाक रख देबी. यदि डेटा रो वॉल्यूम अधिक अछि, देन आई विल गो फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल शीट्स. That is how it is decided. Okay, so the data volume अधिक अछि, I will maintain different sheets. So the data volume बहुत ही कम अछि, आउ मु गोटे sheet रे रखबी सब जाक. Okay, ओके थैंक यू सर गोटे सेट रे केते डाटा स्टोर हे परियो? हाँ, yes, good question. गोटे sheet रे Excel will store okay 10,48,576. Okay, so 1 million records तमे store करि परिबो. एठी जदि देखिबो, I will show you. Okay, so see, so गोटे sheet रे 10,48,576 rows, 16,384 columns. Okay, so एतिक डेटा तुम सेव कर परिबो. एटा मल्टीप्लाइड बाय एटा होचे एतिक सेल्स, राइट? ऑब्वियसली एतिक ही सेल थिबो, राइट? यस और नो? rows into columns, Yes, sir. जेतिकटा सेल सेतिकटा सेल थिबो. Okay, Excel see, one more thing is the one which we have opened here. So एटा को कहंती गोटे ये कंप्लीट एक्सेल फाइल टाको कहंती गोटे वर्कबुक. देखा एटी बुक 1 लिखा हैछि. Okay, so Excel file is called a workbook. One workbook can have multiple worksheets. Clear? One workbook can have multiple worksheets. Okay, so here you can see multiple worksheets. Eta complete Excel file ta konti workbook. In one workbook you can create multiple worksheets. Okay, worksheet ro capacity होची एतिक data store करिया, but trust me एतिक data save कले Excel मर जिवो. Okay, जोटी एते ह्यूज वॉल्यूम रे डेटा रे काम हुए से माने डेटाबेस को शिफ्ट करिवे. एक्सेल रे एतिक डेटा ले एक्सेल हैंग हे कि पूरा ओपन होबक 10 मिनिट नबो, क्लोज होबक 10 मिनिट नबो, एमती टाइप रो माने टाइम टेकिंग. व्हेन आई हैव डेल्ट विथ lakhs of rows, 2 to 3 lakhs rows थिला, सेठी माने एक्सेल बहुत स्टक हुए. बेले एमती हैंग हे जिवो तो माने पुणी आमे जे कि लॉन्च करे आसला और भी खोल नथि. ओके,
So जदि वॉल्यूम टिके कम अच्छे एक्सेल यूज करो जोटी एते अमाउंट रो डेटा जनरेट होची दे जनरली कीप द डेटा इन डेटाबेस ओके फॉर बेटर परफॉर्मेंस ओके स्पीड बेटर हो सेठी एटी स्पीड एते भलो होबनी ओके सो सेते के एक्सेल रो प्रॉब्लम होची इट कैन स्टोर 10 million oh sorry 1 million data which is 10,48,576 okay so then again we'll go back to this is tabs ribbon tabs okay this is called formula bar okay I have told you right yes or no formula bar name Yes. box Yes. a cell ta select heichi this is called selected cell okay cell ro address hochi a1 a is representing your column 1 is representing your row okay then these are called columns rows okay cells eguda sabu cells okay and these are called command buttons or ribbon controls okay mu koitri groups okay it is group number alignment font eguda la group so group under roile okay controls control kame command buttons bhi ko and these are called sheets one sheet is opened if you want to create multiple sheets it is side re plus re click kari chala you will have multiple sheets created okay so clear everyone Yes, sir. Clear. Yes, Yes, sir. sir. okay so rows okay a row is a series of data put out horizontally in a table or a spreadsheet okay column is a vertical series of cells in a table or a spreadsheet formula bar the formula bar is the toolbar at the top of the worksheet area okay name box range so what is range okay we'll understand what is range so range mane kon eta hochi individual cell dekho एगुड़ा हूँ सब इंडिविजुअल सेल ओके एटा हला इंडिविजुअल सेल सो रेंज मींस सपोज रेंज मींस अ ग्रुप ऑफ सेल्स range means a group of cells so if I just ask you what is this particular cell's address can you guys tell me T2. T2. so एठी जो range अछि so range is J3 colon K7 बुझियला Yes. so how Yes. this range is represented range means group of cells okay range means group of cells if you are referring to this range suppose mo pakhre ache 10 20 30 40 90 100 200 okay so mu jodi akku add karibi na I have to pass this complete range so jodi mu lekhili equals to 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50 90 plus 100 okay so एमती मु लिखले ना it will take a long time okay so मु मैन्युअली टाइप कर परबे मु द कंप्लीट रेंज टा को सिलेक्ट करी पास कर देले मु कहले कि सम करो h3 रु नै कि h9 पर्यंत that means you are referring to this complete range sa भीतर जत्ते भी नंबर थिबो under this range in this range whatever numbers you have in different cells it will calculate and give you the result बुझियला Yes, sir. देखो Yes, some function I'll Yes, explain sir. sum रे आमे 10 20 30 40 50 एमती सब पास करिया सो एटा करिया इजी ना मु जदी सम रे लिखि देले सिंपली h3 रु h100 पर तो कैलकुलेट कर दिखाओ so what do you think the first one is correct or second one is I mean The easy second. both are correct. Second one. Second one. second one कहीं कि ना तुम पकड़े let's say Second one. गोटे दिटा सेल पाई के you can write like this जदि when you have multiple cells data तुमर let's say लक्षे record अछि तुमको से लक्षे जनकर सैलरी को कैलकुलेट करियर अछि you cannot write 1 lakh times right their salary is 1 lakh times you will have to pass the range so range भितरे your function will take care of everything h3 रु नै कि h100 पर्यंत जते भी नंबर्स थिबो so सबको ऐड करके रिजल्ट देखि देबो okay so एटी कोन देखो there are multiple ways you will get output but कोटा efficient एटर आउटपुट मिलिबो मु जदी एमिति भी लिखिबो आउटपुट मिलिबो मु इक्वल्स टू दिली फर्स्ट इन कहले 10 लिखिबी मनको जनकर सैलरी 1000 टका जनकर सैलरी 2000 जनकर सैलरी 3000 एमिति लिखिली this will also give me output this will also give me output this will also give me output which is the efficient way of writing it
So empty 100, 200, can you write 1 lakh times? Can you capture No, 1 lakh sir. salaries like this? No, sir, not No, possible. sir. Not possible, right? Here also, in this case also, you cannot write a 1 lakh times. Okay. So, but you can write S3 colon H 1 lakh, right? या भीतर जितने सैलरी अच्छी ऐड कर दे दियो. Okay. सर So just सम ऑफ रेंज माने कौन केवल से माने कॉलम किंबा रो को धरि परिबा ना बोथ कॉलम और रो को दुईटा एकत्र कर परिबा दुईटा समरे तमे माने कंटिन्यूअस सेल को यूज करि परिबो. ओके. माने तमे कॉलम रे डेटा थिले भी चलिबो, रो रे डेटा थिले चलिबो. ओके. दीटा कॉलम रे डेटा थिले तुमको कंटिन्यूअस सेल को भी देई परिबो. हम देखिबा. वी विल आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास हाउ इट वर्क्स. ओके. Yes, sir. Okay. So finding answer. So finding answer is fine. माने finding a solution is fine. But finding solution which is efficient. Okay. So data तुम्हारा 10टा अछि. Okay. Let's say एतिक डेटा अछि. एतिक डेटा को नेकी सॉल्यूशन माने इंप्लीमेंट करनी. एतिक डेटा को 5 lakhs टाइम्स मल्टीप्लाई करो. जदि मो पाखरे एतिक डेटा थांता, जदि एटी 10टा डेटा अछि, मो पाखरे 5 lakhs डेटा थांता. So the solution which I am implementing, is that really feasible? So implementation is a key. Okay, that question you will have to ask yourself. Just finding the answer will not help. Maybe 5टा ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, but it will not work for 1 lakh rows or 2 lakhs rows. Getting my point? Understanding what I'm trying to convey? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay. So Excel file, we can in a cell, what we can do basically. Cell, we can write or enter values. Apply formulas. Okay, apply formulas. এই ଜିନିଷଗୁଡ଼ା mainly ଆମେ କରିପାରିବା. apply formatting. Okay, ଗୋଟେ value ଲେଖିପାରିବା, ଗୋଟେ formula ଲେଖିପାରିବା. cell ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? basically ଗୋଟେ value ଲେଖିପାରିବା, ଗୋଟେ formula ଲେଖିପାରିବା, ଆଉ କିଛି formatting apply କରିପାରିବା. Okay, so how? Let's say 100 ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ cell ରେ ମୁଁ formula ଲେଖୁଛି equals to. Okay, ଆଉ ଗୋଟେ cell ରେ କିଛି ବି ଲେଖିଲି, formatting କଲି. ଏଇଟା ହଉଛି text ର formatting change କରିବେ. Okay, so ଗୋଟେ text ଲେଖିପାରିବ cell ରେ, ଗୋଟେ formula ଆମେ ଲେଖିପାରିବା. ଦେଖ ଏଠି formula ଏ ଯୋଉ 600 derive ହେଇଛି, 100 plus 200 plus 300, then we can also write, we can also apply formatting. So we can is तीनटा जिनिस तमे मेनली कर परिबो. ओके. सो एक्सेल को डेटा को अंडरस्टैंड करे, को टाइप रो डेटा को अंडरस्टैंड करे. टेक्स्ट, Number. numeric, text numeric number, text number, boolean value. Let's say The Boolean value कौन? I'll explain, don't worry, I'll explain. Okay. I think everyone knows what is text, right? Text value janicho, right? Yes. yes Okay. Do you see any difference between text and numeric value? କିଛି କି ଜାଣି ପାରୁଛ? କିଛି ଗୋଟେ difference ଦେଖୁଛ?
Text to Yes, sir. let's Left ରେ at ରହୁଛି left. text ଟା, right ରେ numeric। Excellent, excellent. So in Excel, when you write a text value, it is always left aligned. Okay, left को align ହେଇକି ରହିବ। When you write a numeric value, it is always right aligned. Okay, so alignment ରୁ ଜାଣିପାରିବ whether it's a text or it's a number. Okay, ଯଦି ମୁଁ number ଟାକୁ text ହିସାବରେ treat କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, let's say 100 ହଉଛି ଗୋଟେ number, 1000 ହଉଛି ଗୋଟେ number, I want this cell to treat this 1000 as a text value. Okay, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, right? A is a text. Okay, ABC is a text. ABC 123 is a text. Address plot number 123, comma. Okay, LB Nagar. It is also a text, right? Yes or no? Yes. But number can also be treated as a text. केमती ना number पूर्वरु गोटे single quote दे दियो, it will be a text value. Left align ही गला, right? Yes, sir. It's a number. Actually, it's a number. तो आमे चाहूँ चाहे को text वाले treat करिए को, okay? So say that it is a text value now. If you want a number to be treated as a text value, just give a single quote. Number पूर्वरु. Now it is a text value. Okay. So what is a Boolean value? Sir, ଗୋଟେ question, sir. Yes. Sir, text ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ number ଭାବରେ add subtract କରିପାରିବାନି, ଏମିତି କିଛି। Hey, James, Excel is smart enough. Let's say I will give it a try. Sometimes it may not work. Let's give it a try. It is जानी है जो। Okay. So Excel कौन करते ना? Excel जेतोले plus sign तमे use करछो. Actually, it is actually a number, right? Yes, sir. It is Yes, sir. actually a number. किंतु Excel जेहेतु plus sign use करछी से check करछी. Actually, if it is a number, then number को add कर दोछी. यदि number हो ताले सेटा को तुमको join कर दबा. दीटा को join कर दबा. Let's say हमर एठी अछि, let's say hello world. I'll explain you this. Equals to hello. आमे जदि आपको append करियार थिबो, दीटा को join करियार तो we have to use and hello world. Okay, so हम एठी append and use कले maybe concatenate कर दबो, join कर दबो. हला? Yes. Okay, so basically एटा काई दरकार हुए तमे बहुत सारा एप्लीकेशन फॉर्म रे भला बेल तमे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एमती अलग अलग करी भरो, राइट? बहुत सारा एप्लीकेशन फॉर्म भरथिबो. फर्स्ट नेम गोटे जगह रे भरथिबो, मिडिल नेम गोटे जगह रे भरथिबो, मिड नेम देन सरनेम. बट Yes, sir. जेतेबेले तुमको एडमिट कार्ड टा प्रेजेंट करा जिवो, एडमिट कार्ड रे तुम्हारा फुल नेम लिखा हेतिबो, राइट? Yes. नॉट एमती गोटे फॉर्मेट लिखा हेतिबो. लेट्स से राइट, तुमको कोई न तो कि एटा होस फर्स्ट नेम, एटा होस लास्ट नेम, एटा होस मिड नेम. के एडमिट कार्ड बेस प्राइस में सेमती मेंशन हेतो, बट फॉर्म अप्लाई कला को तमे भरथिबो सेपरेट. ओके, कहीं ना गोटे गोटे कंपनी रो रूल था. लेट्स से ओके, सो मु कैपजेमिनी थिला बेले मोर ईमेल आईडी थिला jena.gs. ओके, तांकर रूल होची, ओके, माने ईमेल आईडी जनरेट करिया पे कि सरनेम रो फुल नै जाओ. ओके, फर्स्ट नेम रो गोटे लेटर नियो, लास्ट नेम रो गोटे, सॉरी मिड नेम रो गोटे लेटर नियो, एमती जनरेट करो. जहार मिड नेम नाही तार एमती आसी जिवो jena.go. सला फर्स्ट नेम रो दीटा कैरेक्टर नै जाओ. बुझियला? That is how, that is the logic. Okay, सेमान implement करंती एम्प्लॉयर ईमेल आईडी जनरेट करिया पे. ओके, सो सेमती तुमको सेती पे कि सेमाने सेपरेटली कैप्चर करंती. व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, व्हाट इज योर मिड नेम, व्हाट इज योर लास्ट नेम. सो तांकर सेमाने तांकर लॉजिक लगांती कि केमती एम्प्लॉय आईडी जनरेट करिवे, केमती ईमेल आईडी जनरेट करिवे. ओके, सो सेटू किछि किछि कैरेक्टर ने कि सेमाने डेवलप करंती एम्प्लॉय आईडी और ईमेल. सो डिपेंड करे, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करे. ओके, ये केमती करिया चाहूछ. So we understood text, we understood numeric. What is Boolean value? Okay, koi pare what is Boolean value? Yeah, true and false. Yes. It is represent to true and false. Yes. True, mane true, false. Ako kohti Boolean value. Okay. If I write true, if I write false, if I write true, false. Our alignment code is center, right? Major align nature, right? Middle or center. Yes, sir.
Okay, so text value is always left aligned, numeric value is always right aligned, Boolean value is always center aligned. Excel can understand only these three types of data type. In other programming language, you have different types of maybe 10, 20 types of data types. But ଏଇଠି Excel ବୁଝିପାରିବ text, numeric, Boolean value. ଆଉ ଏ Boolean value ଆସିବ କେମିତି ତମେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ନମ୍ବର ତମେ ଜାଣିଛ Boolean value actually କେମିତି ଆସେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ comparison କରେ suppose ଜଣଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଉଛି 30 ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କି equals to this value C6 is greater than equals to 18 or not. ये ए लोग वोट दबा पे कि एलिजिबल और नॉट सो मु लिखली equals to C6 greater than equals to 18. So will it return me true or false? True. So everyone is understanding? Yes. So Yes, now sir. Yes. so ଯେତେବେଳେ ତମେ କିଛି comparison କରିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ boolean value ଆସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ value କିଛି ଗୋଟେ expression କୁ evaluate କରିବି okay compare କରିବି compare କଲେ I will get either true or false enter you will get true ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଲି greater than 50 or not ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରିବା ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଏ particular ଲୋକ senior citizen କି ନାହିଁ okay so ଏଠି greater than equals to no 60 ଉପରକୁ ଆମକୁ ଦରକାର okay greater than 60 ମାନେ he is a senior citizen. Okay, this person is not a senior citizen because age is 30. Okay, so equals to C6 greater than 60 or not. Okay, ଯେତେବେଳେ ତମେ କୌଣସି comparison କରୁଛ so comparison ର outcome ହେଉଛି either true or false. Okay, clear? ତ sir text ସଦାବେଳେ left ରେ ରହୁଛି numeric right ରେ ରହୁଛି ଆଉ boolean middle ରେ ରହୁଛି. Yes. Okay, clear everyone? Clear, sir. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. Yes. so Excel को हमें basically Excel तो हमें किसी एमते randomly किसी जाने ले so how to save it so save file save जाओ save करो okay save कलो आपको more options रे जाऊँचे okay so browse कले okay so I'll go to batches okay September double click file run let's say session 1. So every file, most of you know, every file will have, ଯେତେବେଳେ ଆମେ file computer ରେ save କରୁଛେ, every file will have an extension name, right? Yes or no? Every file will have an extension name. ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? Yes, sir. Yes, sir. Okay? जो ନ ଜାଣିଛ ଟିକେ କହିଦଉଛି, okay? So जो file computer ରେ save ହେଉଛି, it has a primary name. ଗୋଟେ file ର primary name ଥାଏ, okay? ଗୋଟେ file ର extension name ଥାଏ. Extension name. So basically extension name को जाने हमें देखिए कि जाने suppose okay deal.mp3 so this is a primary name mp3 is an audio file which is an extension name dot पर जो आସୁଛି okay so सेमती resume.doc okay so it's a word file doc होची word file resume होची primary name this is a primary name this is a secondary or extension name सेमती excel file save कले ये फाइल जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल समस्तଙ୍କର एक्सटेंशन आसबा एक्सेल एसएक्स ओके एक्सेल रो एटा होचे एक्सटेंशन एक्सेल रो आमे यूज करछे तमे यूज करते 2013 वर्जन की यूज करते 2014 ओके आई एम यूजिंग 2021 आमे एथरे जो फाइल सेव करले हमको फाइलटा .xlsx रे सेव हो ओके बट एक्सेल रो ओल्डर वर्जन रे 2003 एंड बिलो ओके 2003 वर्जन जेतो एक्सेल 2003 आस्तिला ता पूर्वरु एक्सेल रो एक्सटेंशन थिला .xls ओके लेटेस्ट वर्जन रे एक्सटेंशन चेंज हेची xlsx okay so now if we save any file we'll get the extension as .xlsx okay so let's see okay can you see the extension name Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. okay actually कौन हुए मु काहे के extension कहले xlsx तो मु गोटे simple example देबी you will understand it
ओके let's say ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ application ମୁଁ 2000 ରେ ଗୋଟେ application develop କରିଥିଲି year 2000 or year 2003 ରେ ଗୋଟେ application develop କରିଛି এটা হচ্ছে employee information system employee management system or information system okay so employee management system रे सब जगह employer information name address आधार कार्ड पैन कार्ड previous organization रो जहाँ जहाँ तुम काम करूचो एटा कौन होची ना तुम okay so fine Dipti that's okay so employee management system रे कोटे application अच्छे बहुत basic है फॉर एग्जांपल एटा जावा प्रोग्रामिंग रे डेवलप करा है जोठी एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन कैप्चर हो तमे एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन मैनुअली सब फील्ड भर की कैप्चर कर परिबो लेट्स से नेम लेट्स से एड्रेस आधार पैन प्रीवियस एम्प्लॉय जोठी काम करथियो एम्प्लॉयर डिटेल्स ओके वर्क एक्सपीरियंस सब एमते डिटेल्स भर परिबो ओके सो आइदर एमते तुम भर परिबो नहले एथिरे आउ गोटे स्क्रीन अछि अपलोड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एथि गोटे स्क्रीन अछि जोठी हमें ए एप्लीकेशन गोटे स्क्रीन अछि अपलोड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन ओके सो अपलोड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन रे कोन हो मु कोन करबी अपलोड फाइल करकी गोटे अपलोड फाइल और गोटे बटन अछि ओके सो अपलोड फाइल गोटे बटन अछि एठी मु क्लिक करू से कहबो कि फाइल सिलेक्ट करो आउ से फाइल गोटे एक्सेल फाइल हेतिबो से एक्सेल फाइल रे तमे सारा डिटेल्स भरे देलो से फाइल टा अपलोड करले भी तम इंफॉर्मेशन कैप्चर हे जिवो ओके डेटाबेस रे पळेबो तम इंफॉर्मेशन सो समस्त बुझिलो क्लियर कोन एप्लीकेशन रो काम कोन एवरीवन अंडरस्टूड Yes, sir. Yes, sir. आइदर तुम मैनुअली फ्रंट एंड दिया तो सेठी एंट्री करी के एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन को सेव करि परिबो नहले ये गोटे स्टैंडर्ड फॉर्मेट को सपोर्ट करतो से फॉर्मेट रे तुम ना एड्रेस को एक्सेल रे फिल कर दियो एठी अपलोड मार दियो से सेमिति ही कैप्चर करिवे दीटा वे रे तुम करि परिबो ओके दीटा ऑप्शन अछि ओके सो फर्स्ट थिंग होची ये एप्लीकेशन डेवलप होची 2000 ईयर रे ओके जोटा कि आजिका डेट रे 2024 रे भी मोर कंपनी रे मु यूज करछि टू कैप्चर द ऑल द न्यू एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन को कैप्चर करछि ओके सो 2000 रे तबल तुम करूछो सेतबल तुम पाखरे एक्सेल 2000 थिला राइट एमएस ऑफिस 2000 थिबो राइट यस और नो एमएस ऑफिस 2000 थाई पारे नले 98 थाई पारे नले 2001 थाई पारे जाबि थिला सेतबल एक्सेल रो एक्सटेंशन थिला एक्सेल एस बुझियोछि क्लियर आगुर एक्सेल रो Yes. एक्सटेंशन थिला एक्सेलएस सो मो जेतेबेले एप्लीकेशन टा डेवलप करथिली आई हैव हैंडल्ड एमएस ऑफिस रो एई वर्जन टा को मु हैंडल करथिली राइट बुझियोछि कारण मु कोड रे भी Yes. ये जावा रे प्रोग्राम लिखुछि से भी कहबो ना कि से भी मेंशन करबो ना कि एक्सेल को आइडेंटिफाई करो एक्सेल को अपलोड कला पर कोन काम करिवो से सब कहबो ना फाइल टा भी सपोर्ट करिया पे कि भी प्रोग्राम लिखिया पड़िबो फाइल टा केमति आसी एटी आसी इंटीग्रेट हेई परिबो क्लियर Yes, sir. एबे चलछि 2024 ओके एबे लोकन पाखरे को लेटेस्ट एक्सेल थिबो यस और नो एबे Yes. समस्त पर Yes. लेटेस्ट Yes, sir. एक्सेल थिबो तमे Yes, sir. तमरो जो एक्सेल थिबो सेटा होछि एक्सेल एसएक्स राइट बुझी होछि तम पाखरे जो एक्सेल थिबो तमे किछि भी कोड सेव कला को तमर आउटपुट तम फाइल रो एक्सटेंशन हे जाउछि एक्सेल एसएक्स बुझी होछि Yes, sir. तमे जतो एक्सेल एसएक्स फाइल टा को नै केटी अपलोड करिवो से लिखिबो इनवैलिड फॉर्मेट ये फॉर्मेट को ये प्रोग्राम बुझी पाउनी काहे कि ना प्रोग्राम लॉन्ग बैक डेवलप हेछि 2000 मसिया रे कि 2002 3 रे डेवलप हेछि जतबेले ए एक्सेल थिला याकू ए वर्जन टा को से सपोर्ट करछि नॉट द लेटेस्ट वन आर यू गेटिंग माय पॉइंट Yes, sir. Yes, sir. कारण Yes. एटा ओल्ड एप्लीकेशन एतरे किछि कोड रे चेंज करानी नुवा वर्जन को ये वाला फॉर्मेट को केमिति आइडेंटिफाई करिवो ताको हमें प्रोग्राम रे कहि ना हमें मेंशन है को जावा कोड किछि चेंज है से सेतबेले डेवलप हेछि अपन तो चलछि मते किछि एतरे किछि मेजर मु देखुछि प्रति मास रे कोन मोर 10 15 टा एम्प्लॉय ऑनबोर्ड होउछन्ती ताको पे मु पुनी गोटे डेवलपर को लगे कि पुन चेंज करबि ना एप्लीकेशन को मु से ओल्डर एप्लीकेशन यूज करबि एतरे तो मो काम होउछि एटा यूज कर बट प्रॉब्लम कौन होचे तमे तो एक्सेल एसएक्स रे तमर नेम एड्रेस सब भरुचो करंट एक्सेल फाइल रे एंड यू आर ट्राइंग टू अपलोड यू आर गेटिंग दिस एरर कि ये फाइल को इनवैलिड फॉर्मेट टाइप नॉट सपोर्टेड बाय दिस एप्लीकेशन because it is developed long back it only supports CA format XLS
ତମ ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆରେ यार ମୁଁ ତ ଇନଫର୍ମେସନ ସେଭ୍ କରୁଛି व्हाट इज हैपनिंग व्हाट टू डू देन ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଏକ୍ସଏଲଏସ୍ ଫାଇଲ ଏବେ ଯେ ନ ଜାଣିଥିବ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ସୋ ସେଥିପାଇଁ କି ଏକ୍ସେଲ ତମକୁ ନା ୟାକୁ କହନ୍ତି फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी माने तुम एप्लिकेशन टा तुमको एमिति डेवलप करार अछि फ्यूचर ए एप्लिकेशन ओल्ड हेले भी फ्यूचर रे जदी तमर किछि डेवलप हो जदी एक्सेल रो किछि चेंज होछि तमे से एप्लिकेशन टा को एमिति बनाया दरकार से मे बी फ्यूचर माने फ्यूचर वर्जन गुडा सपोर्ट करा दरकार नले आज का डेट रे जदी तमे एप्लिकेशन बनौछो तमे एमिति एप्लिकेशन बनाया दरकार तुमको पुराना फाइल भी सपोर्ट करा दरकार एक्सेल सपोर्ट करा दरकार ये गोटे कांसेप्ट अछि कॉल्ड फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ओके नॉट दैट वेरी इंपोर्टेंट बट फॉर योर नॉलेज तो एठी यार सॉल्यूशन कौन जदि आमे भाबुचे कि नहीं ठीक अच्छी तो जहाँ तो मु अपलोड करूची बट इट इज नॉट हैपनिंग नाउ इट इज नॉट एक्सेप्टिंग आर सॉल्यूशन होची एक्सेल रे गोटे प्रोविजन अछि ओके सो एक्सेल रे कोन अछि जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन ओके एक्सेल रे कोन प्रोविजन अछि मु जदि फाइल टा को सेव करबी फाइल ओके सेव एज ओके सेव एज कली फाइल टा को आउथरे सेव करे चाहूची ओके एठी मु लिखिली चेंज कले हेलो ओके फाइल रो नाम देले हेलो एटी देखो बाय डिफॉल्ट एक्सएलएस नोची लिखले हेलो तापर सेव एज टाइप रे गले एटी देखो कैन यू सी एक्सेल 97 2003 वर्कबुक कैन यू सी दिस तमे जदि लेटेस्ट Yes, एक्सेल sir. फाइल रे काम करूचो तमे चाहूचो ओल्डर फॉर्मेट रे ओल्डर वर्जन एक्सेल भलिया सेव करिया को ओल्डर फॉर्मेट रे सेव करिया को एक्सेल से प्रोविजन देछ देखो एक्सेल 97 2003 ओके तापर मु सेव कर देली सेव कला परे you guys can you see the extension is changed Yes. sir. Yes, sir. okay now so everyone understood ताहले ताहले एबे सपोर्ट करिवो कि नहीं तमर जो Yes, जावा sir. Yes, sir. कहीं ना जावा एप्लीकेशन सपोर्ट करनथिला लेटेस्ट वर्जन को बट मु जदी सेम फाइल को ओल्डर वर्जन रे सेव कली नाउ इट विल सपोर्ट मु नै कि सेटी से फाइल टा अपलोड मार देबी एबे हे परिबो सो सेति पे कि एठी भी अछि तम डिफरेंट डिफरेंट वर्जन रे सेव करि परिबो अलग अलग फॉर्मेट रे भी सेव करि परिबो ओके क्लियर एवरीवन Sir, sir गोटे क्वेश्चन यस सर जदि आमे एटा फाइल टा को आमे एक्सेल एक्सएक्स रु एक्सेल एस को करि देलु तो ता भितर जो डाटा थिबो सेटा टिके अल्टर होबो कि किछि सेमति ही रहइबो डेटा अल्टर हबनी बट ओनली प्रॉब्लम यू विल फेस इज जदि देखो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन रे किछि डेटा हार्डली 10 20 टा 30 टा 50 टा 100 टा रहथिबो राइट बट प्रॉब्लम केतबेल हबो एक्सेल रे जो लेटेस्ट वर्जन सेटा होची 10 लाख रो को सपोर्ट करूची हला एक्सेल से पुराना वर्जन रे ओनली यू कैन स्टोर 65000 रिकॉर्ड्स ओके ओके तो ऑब्वियसली सेमतिया केस ले तो हबार चांस नाही ओके तो Okay, एठी sir. 10 लाख रिकॉर्ड को रखी के सेत्री ओल्डर वर्जन को सेव कलो से सब डेटा को ट्रंकेट कर दो ओडी दो ओके तो से केस रे हे परिबे बट नॉर्मली ए सब जिंस हे परिबे आ जहार एते इंपोर्टेंट एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली चेंज करियो पड़िबो राइट तो एप्लीकेशन को Okay, sir. अंडरस्टैंड करियो पड़िबो लेटेस्ट फाइल होची एटा एतिरो हमको भी डेटा रीड करियो अछि एटा जेतु एते मिशन क्रिटिकल एମିତି କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଅଲ୍ଟର ହେଲା କି ନାହିଁ हां हां ସେ ओके ଟ୍ରିକ୍ ଟା ଜାଣିପାରିବେ ନା ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଅଲ୍ଟର ହେଲା ଡାଟା ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଟା हां ଜାଣିପାରିବା नहीं नहीं ନାଇଁ जानी परिबनी जानी हबनी मेन होची कोन डेटा कम थिले अल्टर हबार नाही जदी एतिरे 65000 भीतर अछि जदी एक्सेल एसएक्स फाइल रे 65000 भीतर अछि देन दैट विल नॉट मेक एनी इम्पैक्ट बट इफ योर एक्सएलएस फाइल हैज मोर देन 1 लाख रिकॉर्ड्स सेटी सपोर्ट करछि 65000 तो ऑब्वियसली तम डेटा तो डिलीट होबो ना बुझी होची ମାନେ ସେ Sir, ଡାଟା ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇପାରେ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ କି ଗୋଟେ ସ୍ଲାସ୍ ଏଇଗୁଡାକ ଅଲ୍ଟର ହବନି ତ ना ना ଗୋଟେ डेटा सिंबल ना ना एक ना ना किछि चेंज होबनी खाली एया ही चेंज होबो ओके सो ଫର୍ମୁଲା ଫର୍ମୁଲା ହେଇପାରେ मोस्टली देखो मोस्टली कहीं यूज करिवेनी मु कहूची फॉर एग्जांपल बिकॉज सेम मु टेक महिंद्रा जॉइन कला को सेम इश्यू आई हैव फेस्ड सो टेक महिंद्रा इज यूजिंग एम्प्लॉय रो जो डेटाबेस रखी छे सेम थी प्रॉब्लम थिला मु जो लेटेस्ट फाइल रे अपलोड कली it clearly said me that this format is not supported again I'll have to save that in excel s then upload kala ko hela okay
सो सेति ପାଇଁ कि तुमको जतबे अधिक डेटा अछि डेफिनेटली तुम okay. So any other questions? You clear, right? Samasta clear, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. It basically use happen which Excel S or Yes, sir. Excel SX call. It will not be very frequently used, but just for your knowledge. In case you face any issues, okay, तुमको सही फॉर्मेट करियर अछि, चेंज करियर अछि. Obviously मुझे कहली कि जदि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम रे केते हार्डली किछ एम्प्लॉय जॉइन करछते तांकु ना एप्लीकेशन टाको कंप्लीटली चेंज करिया दरकार नहीं टू अंडरस्टैंड द लेटेस्ट एक्सेल फाइल. ओके बट जहार रेगुलर काम होछि ताकु तो करिया को ही पड़िबो. देयर इज नो अदर ऑप्शन. ओके ताकु चेंज करिया को ही पड़िबो. ताको एप्लीकेशन को दे विल हैव टू मेक देयर एप्लीकेशन अंडरस्टैंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल. केते दिन जे ओल्डर वर्जन रे काम करिवे. गेटिंग माय पॉइंट? Obviously, sir. Yes. Okay, so that's it for today. If you guys have any questions, so let me know. Samast clear, Sir, I right? have a, Yes. yes, sir. Yes, Sir, I sir. have a question. Yes, tell me. सर एटा ठारो ठीक अलगा मतलब कि मु कहूची कि गोटे सीट रे सर हमर मने करंतु 10टा कॉलम अछि जोतरी कि डाटा अछि तो हमको सेटा पावर बीआई रे शो करिवार अछि जदि मु सेठी 5टा सीट रखिली गोटे डाटा मतलब कि गोटे एक्सेल फाइल ले मोर 5टा सीट अछि जोतरी कि 10 columns अछि that will be 50 columns in 5 sheets. Sir, I can relate the sheets with the columns in each and every सेठी शो करि परिबि कि ना गोटे सीट रे मु जहा रखिथिबि सेटा केवल गोटे थरो ही पावर बीआई शो करिबो तापर आउ सेठी गोटे सेठी 5टा शीट देखेबो. लाइक सेठी 5टा एठी जेमती फॉर्मेट देखौछ सेठी 5टा शीट देखेबो. ओके गोटे फाइल रे 5टा शीट अछि 5टा शीट देखबो. एबे तमे को शीट को डाउनलोड लोड करिया चाहछो ना तमे सब शीट को लोड करके पुनी मर्ज करिवो समस्त को कंबाइन करिवो. ओके सब शीट देखेबो. पावर बीआई एमती नै कि एठी जहा अछि सेठी सेम देखेबो. सर मु गोटे सीट रो कॉलम को आ गोटे सीट रो कॉलम सहित रिलेट करि परिबि कि से जगह yes you can. ओके सर Okay, करियबो column relate करियबो compare करियबो you can do everything. Okay. ओके Sir, सर how many worksheets are there in your workbook? हाँ ଗୋଟେ workbook ରେ କେତେଟା worksheet ରହିପାରିବ? ଏଟା unlimited ନା କିଛି limitation ଅଛି? नहीं unlimited में you will have a number. So can someone Google it? I forgot it. Okay. हेलो सर. Yes. हेलो सर. Yes. हम मतलब ये एक्सेल में एआई के बारे में पढ़ेंगे कि नहीं, मतलब एआई कैसे यूज करके एक्सेल यूज किया जाता है? हाँ. Well understood. We'll go through that. ओके, थैंक यू सर. Google किया कि Google कलम Sir, ଏଟା 255 sheets ଲେଖୁଛି. 255, right? Yes. Yeah. That's the answer. Okay. You can create maximum of 255 sheets per workbook. गोटे workbook रे 255 टा worksheet you can create. Okay. Yeah. Okay then. That's it for today. Let's connect on Monday. Thank you, sir. So Thank thank you you. everyone. Thank you everyone for joining. So have Thank a you, great weekend. So let's Thank you. connect back on Monday. Yeah.